Hello everyone, my name is Aishwarya Jain. So today I'll be discussing about the topic Bases 1, 2 and 3. So before starting with the session, I would like to inform you that we are providing a cash course of SBI CBO 2023. So to join the course, the batch link is given in the description box. And we also have dedicated WhatsApp and Telegram group, the link of which can be found in the description box. The dedicated live classes are running from 9 p.m. to 11 p.m. daily. So this is our team. So the CBO course highlights, the course is specifically designed for the working professionals, so the people who find less time while working. The course is specifically designed for them, and 2000 plus CBO selected from the Knowledgist since so far, and 90% questions were asked from our question bank. So there's no need to refer any other material, and 120 hours of live session with recording. So to join the Success Club, join our course. So before starting ahead, I would like to inform you that these were the students who got selected last year in 2022. There were 21 qualifiers. So here we are sharing the details. So register now. So Basel norms 1, 2 and 3. अब हम बेसिक नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जब हम बेसिक नॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि व्हेन बैंक्स लेंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, ईच कैरीज इट्स ओन रिस्क. जब एक बैंक अलग अलग बोरोवर्स को लोन देता है, लोन जो कि बैंक के एसेट्स होते हैं, जब बैंक लेंड करता है बोरोवर्स को, सो वो पब्लिक के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको लेंड करता है. तो जो पब्लिक से जो वो पैसा लेता है डिपॉजिट्स के लिए, उनको वो एज अ लोन बोरोवर्स को दे देता है. अब इसमें बैंक को बहुत सारी रिस्क हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बोरोवर ने अपना पैसा पे नहीं किया तो बैंक के लिए बहुत रिस्क हो जाता है. तो डिपॉजिटर्स की मनी को सिक्योर करने के लिए, जिससे कि जो डिपॉजिटर्स की मनी है वो सिक्योर्ड रहे और उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, बैंक में एक ट्रस्ट बना रहे, उसके लिए बेसल नॉर्म्स का इंट्रोडक्शन हुआ है. सो वील स्टडिंग अबाउट इट अहेड इन डिटेल. सो बेसल, अब हम इसको बेसल क्यों बोलते हैं? बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, जिसमें BIS का हेडक्वार्टर है. तो बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड व्हिच इज आल्सो हेडक्वार्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. सो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है, it was established in 17th May 1930 and it is the world's oldest international financial organization. There are 2 representative offices in the Hong Kong and in the Mexico City. तो इसके 2 ऑफिसेज हैं हांगकांग में और मेक्सिको सिटी में BIS के. तो BIS कहाँ पर है? बेसल में. और बेसल इट इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड. तो जो हम BIS है, it fosters cooperation among central bank with the common goal of financial stability and common standards of banking regulations. तो जो BIS है वो जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है. जैसे कि इंडिया का RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो लाइकवाइज एवरी कंट्री हैज इट्स सेंट्रल बैंक. So it helps in the cooperation of the different central banks of the different country for the financial stability and the common standards of banking regulation. तो एक common norms बन जाए, एक standard norms बन जाते हैं, जिससे कि regulation of the banking sector of the central banks becomes easier. तो ये जो norms हैं, जो standard norms हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं अलग अलग कंट्रीज के, ये कौन फ्रेम करता है? वो फ्रेम करती है बेसल कमेटी. तो BIS जो है, वहां पर एक बेसल कमेटी बैठती है जो कि नॉर्म्स बनाती है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स फिर फॉलो करते हैं एंड दे अप्लाई टू ऑल द बैंक्स ऑफ द कंट्री. So this Basel Committee, it is headquartered at the BIS, Banks for International Settlement in Basel, which was established by central bank governors of the group of 10 countries. So central bank governors of the group of 10 countries established this Basel Committee, which is headquartered in BIS, Bank for International Settlement, which is in Basel. So Basel norms or Basel accords. Basel norms or Basel accords are the international banking regulations issued by the Basel Committee on Banking Supervision. तो अब जो ये Basel Committee जो कि BIS में headquartered है, वो जो norms जो
जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स और जो रेगुलेशंस वो निकालती है बैंकिंग के सुपरविजन के लिए, उसको हम बेसल नॉर्म्स या बेसल अकॉर्ड्स बोलते हैं, जिससे कि जो हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है वो स्ट्रेंथ हो जाए. Under the Basel Accord, a bank has to maintain a certain level of cash or liquid assets as a ratio of its risk-weighted assets. तो बैंक जितना रिस्क ले रहा है, जब बैंक अपना, सपोज बैंक पर्सनल लोन भी देता है, बैंक होम लोन भी देता है, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लोन के केस में सिक्योरिटी नहीं होती, कोलैटरल नहीं लेता है बैंक कोई, तो पर्सनल लोन के केस में बैंक के पास रिस्क ज्यादा होता है, तो जो रिस्क का वेटेज है उस केस में ज्यादा है. और जब हम होम लोन की बात करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो बैंक कुछ कोलैटरल मांगता है बोरोवर से, तो इन दैट केस द रिस्क इज लेस. तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रिस्क, हर एक अलग अलग रिस्क के हिसाब से बैंक को एक कैश या फिर लिक्विड एसेट, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है, सो दैट इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल शॉक या कुछ भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है इकोनॉमी में, दैट कैपिटल कैन बी यूटिलाइज्ड एंड द डिपॉजिटर इंटरेस्ट इज सेफगार्ड. Next, so here we'll be talking more about the Basel Committee, which is called as the Basel Committee on Banking Supervision, BCBS. इसका शॉर्ट फॉर्म में BCBS भी कहते हैं. So ये बेसल कमेटी का मेन ये होता है कि इंश्योर करें कि एडुकेट कैपिटल हो बैंक के पास, जिससे कि डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड रहे, जो लोगों ने अपना पैसा जमा किया हुआ है बैंक में, बैंकरप्ट ना हो जाए. बेसिकली बैंक डज नॉट गो बैंकरप्ट, ट्रांसपेरेंसी रहे बैंकिंग ऑपरेशंस में, और एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल शॉक से बैंक सेफ रहे. सो अब हम जब ये जो बेसिक कमेटी के बारे में बात करते हैं, तो इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज इन 1974. तो मेन ये क्या करता है, ये नॉर्म्स, मतलब ये प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ द बैंक्स एंड टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर रेगुलर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स फॉर द सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. बेसिकली सुपरविजन करना, उनके लिए नॉर्म्स बनाना फॉर द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. So the committee expanded its membership in 2009 and then again in 2014. The BCBS now has 45 members from 28 jurisdictions, consisting of central banks and authorities with the responsibility of banking regulations. It provides a forum for regular cooperation in the banking supervisory matters. Its objective is to enhance the understanding of the key supervisory issues and improve the quality of the banking supervision worldwide. So here the interest of the depositors is not compromised. बैंक करप्ट नहीं होता है, बैंक डिपॉजिटर्स मनी इज नॉट लॉस्ट. तो उन सब चीजों की सेफगार्ड के लिए ये बेसल कमेटी डेवलप हुई थी. नेक्स्ट, सॉरी, Basel I. So when we talked about the Basel I, it was introduced in 1988. अब बेसल में there are three basels, Basel I, Basel II and Basel III. So the latest is Basel III. जब हम Basel I की बात करते हैं, it was introduced back in 1988. It focused almost entirely on the credit risk. जब Basel I आया था, तब फोकस सिर्फ क्रेडिट रिस्क पर था. तो क्रेडिट रिस्क वो रिस्क होता है कि बोरोवर ने अपनी लोन की पेमेंट नहीं करी है या फिर अपना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं करा है. So credit risk is the possibility of the loss resulting from a borrower's failure to repay a loan or to meet its contractual obligation. That means it refers to the risk the lender may not be able to receive its principal and interest. बैंक को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं हुई है, हम उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क. तो देयर इज द रिस्क. अभी बैंक किसी को लोन देता है तो रिस्क होता है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा. The Basel I defines the capital and the structure of risk weights for the bank. जब भी हम रिस्क वेट्स की बात करते हैं, अलग अलग एसेट प्रोफाइल्स का अलग अलग रिस्क होता है. सो हेयर इन फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नॉर्मल लोन की बात करें जिसमें कोई एसेट से वो बैक नहीं है, फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन, सो इट हैव मोर रिस्क than to the assets which are backed by the collateral. So they have lesser risk क्योंकि collateral से back किए गए हैं. For example, loan against property or home loan, they have less risk than the personal loan. तो हर एक लोन का which are the assets of the bank, they have different weights. So the risk weighted assets of the different loans are different. According to the risk weight, the capital is defined. तो अगर बैंक ज्यादा रिस्क की लोन्स में इन्वॉल्व है, रिस्क की एसेट्स में इन्वॉल्व है, तो उसको कैपिटल ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली लेस इफ इन केस द रिस्की एसेट्स आर लेस.
So infusing more and more money or more capital to prevent banks from becoming bankrupt is the main goal of these Basel norms. So here the bank assets were classified according to their level of risk, as I told you, and banks are required to maintain emergency capital based on that classification. Accordingly, bank को capital maintain करनी पड़ती है according to their risk weight classification. The minimum capital requirement was fixed at 8% of the risk weighted assets, whereas according to RBI, it has to be maintained 9%. तो Basel के according जो minimum capital requirement है, it is fixed at 8% of the risk-weighted assets, जबकि RBI कहते हैं 9% maintain करना है. India adopted Basel I guidelines in 1999. So next. So here I talked about the capital and the risk-weighted assets. So risk-weighted assets के accordingly बैंक को capital maintain करनी पड़ती है. तो अब जो capital है, it is defined into two parts, that is the tier 1 capital and tier 2 capital. The bank's capital consists of tier 1 capital and tier 2 capital, and these two primary types of capital reserves are qualitatively different in several respects. जब हम tier 1 capital की बात करते हैं तो it's the bank's core capital. ये बैंक की कोर कैपिटल होती है. कोर कैपिटल इज द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक, एंड द इक्विटी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर द रिटेन्ड अर्निंग. जो भी बैंक को प्रॉफिट होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है. दैट इज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. एंड द डिस्क्लोज रिजर्व्स दैट अपीयर्स ऑन द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी डिस्क्लोज रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया गया है, that amounts to the tier 1 capital. So the preferential share capital, equity capital, paid up capital, undistributed profit, disclosed reserve, all these are the part of the tier 1 capital. So in the event of a bank's experience significant losses, tier 1 capital provides a cushion that it allows it to weather stress and maintain a continuity of operations. जिससे कि बैंक bankrupt ना हो और उसके operations चलते रहें. It act as a tier 1 capital, act as a cushion in case of losses to the bank. And tier 2 capital is a supplementary capital. It includes undisclosed reserves, revaluation reserves. जब हम revaluation reserves की बात करते हैं तो जो बैंक के assets हैं over a period of time in their balance sheets, जो assets की value होती है वो change होती रहती है. Over a period of time there may be a change, increase in the value, maybe decrease in the value. So they are the revaluation reserves, hybrid capital instruments, and the subordinated debt instruments. So subordinated debt instruments वो instruments होते हैं which are met after the normal creditors. So after all of them is paid in case of winding up, बहुत last में इनकी payment होती है. So it is not compulsory कि mandatory to pay them. So subordinated debt instruments are for the long term. So tier 2 capital is considered less reliable than tier 1 capital because it's more difficult to accurately calculate and more difficult to liquidate. So tier 1 capital is more liquid. Bank का main focus tier 1 capital पर है. Next, Basel II. When we talk about the Basel II in 2004, Basel II guidelines were published by the BCBS, that is Basel Committee for Banking Supervision. These were the refined and reformed version of Basel I Accord. तो ये जो बेसल 2 की जब हम बात करते हैं ये एक रिफाइंड और रिफॉर्म वर्जन है बेसल 1 का. तो इट इज मोर एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बेसल 1. जब हम बेसल 2 की बात करते हैं, दीज गाइडलाइंस मेनली इसकी 3 पिलर्स होते हैं: कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट्स, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दैट यू नो ऑल दीज 3 पिलर्स एंड लाइन बाय लाइन, wherein first pillar is the capital adequacy requirement. So there can be a question such as, what is the third pillar of the Basel II? So you have to mention there it's the market discipline. So the first one is capital adequacy requirement, second is the supervisory review, and third is the market discipline. So we'll be discussing of them one by one. First, when we talk about the capital adequacy requirement, capital adequacy requirement means the bank should maintain a minimum capital adequacy requirement of 8% of risk assets. जो भी बैंक के risk assets हैं उसका 8% बैंक को maintain करना है capital adequacy. So this CAR, that it is capital adequacy requirement, according to the RBI, it has to be maintained 9%. Basel के according it's 8%, while according to the RBI it's the 9%. तो जो भी फंड मेंटेन करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिस्क वेटेड एसेट्स, तो ये बफर क्रिएट करता है रिस्क एसेट्स का, जिससे कि उसके रिस्क को मिटिगेट हो जाता है.
So when we talk about the CAR, it means total capital upon the risk-weighted assets. Risk-weighted assets here include capital risk, market risk, and operational risk into 100. So CAR includes total capital divided by the risk-weighted assets. Assets here are the loans of the bank, as I already told you. So a buffer create हो जाता है. When we talk about the supervisory review, according to this, banks were needed to develop and use better risk management techniques. तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिस्क को अच्छे से मेंटेन किया जाए, ऐसा ना हो कि बैंक बहुत सारा ही पैसा रिस्क की एसेट्स में डाल दे. तो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हो, उनको मॉनिटर हो, उनका सुपरविजन हो, दैट इज द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस. सो हियर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क दैट बैंक फेसेस. जब हम बेसल 1 की बात करते हैं, हमने सिर्फ क्रेडिट रिस्क पर फोकस किया था. जब हम बेसल 2 की बात करते हैं, तो उसमें क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क. Credit risk, as I already told you, credit risk depends upon the default by the borrower, and the market risk, when we talk about the market risk is the risk of like foreign exchange risk, interest rate risk. When we talk about all these risks, these are the type of the market risk. Other risk of loss is like on and off the balance sheet position, like commodity risk, interest rate risk, stock price risk. So when there is a movement in the market prices, उसकी वजह से जो रिस्क होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क. और जब हम ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं, it is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or system, or from the external events. It is mainly caused due to the human errors or mistakes. System failure हो गया, server down हो गया, programming errors आ गए, due to improper information processing, leaking or hacking of information, and inaccuracy of data processing. So जो जब ऑपरेशंस, बैंक के ऑपरेशंस में ही कुछ गड़बड़ हो जाती है ड्यू टू ह्यूमन एरर या इंफॉर्मेशन में, या फिर कुछ फ्रॉड हो जाता है इंटरनल ऑपरेशंस की वजह से, तो वो ऑपरेशनल रिस्क में आता है. Third, when we talk about the third pillar, which is the market discipline, when we talk about it, this needs increased disclosure requirements. Banks need to manually disclose their capital adequacy ratio, risk exposure, etc. to the central bank. तो बैंक को मैन्युअली डिस्क्लोज करना पड़ता है कि क्या वो कैपिटल मेंटेन कर रहा है अगेंस्ट द रिस्क weighted assets. So बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी पब्लिश बैंक करता है, तो हम इसको बोलते हैं डिस्क्लोज करना अपनी सारी चीजों को आरबीआई को. मार्केट डिस्क्लोजर मींस डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई. Next, so I already told you there are 3 pillars which are very important. First is the minimum capital adequacy requirement, second is a supervisory review, and third is a market discipline. So you have to learn this 3, which are very important. Third, when we talk about the Basel III, which is the latest one, in 2010, Basel III guidelines were released, and the Basel III framework is a central element of the Basel Committee's response to the global financial crisis. तो जब हम बेसल 3 की बात करते हैं, बेसल 3 गाइडलाइंस वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008. 2018 में जो सब प्राइम फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तब ये बेसल 3 इंट्रोड्यूस किया गया था. सो अ नीड वाज फेल्ट देयरइन टू further strengthen the system of the bank. The guidelines were aimed to promote a more resilient banking system by focusing on the 4 vital banking parameters, which is the capital, leverage, funding, and the liquidity. तो जब हम कैपिटल की बात करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, कैपिटल 2 टाइप्स की होती है, टियर 1 कैपिटल एंड द टियर 2 कैपिटल. टियर 1 कैपिटल इज द कोर कैपिटल ऑफ द बैंक, whereas टियर 2 कैपिटल इज द सप्लीमेंट्री कैपिटल ऑफ द बैंक. टियर 1 कैपिटल includes the paid up capital of the bank, and the tier 2 capital includes the undisclosed reserves, subordinated debt instruments, etc. and etc. Now the capital adequacy ratio is to be maintained at 9%. So as per the RBI, it is to be maintained at 9%, and the minimum tier 1 capital ratio and the minimum tier 2 capital ratio has to be maintained at 7% and 2% of the risk weighted assets respectively. So जो tier 1 capital है वो 7% होनी चाहिए minimum, and the tier 2 capital should be 2%. The tier 2 capital cannot be more than 100% of the tier 1 capital. So जब हम tier 1 और tier 2 capital की बात करते हैं, तो tier 1 capital is further divided into 2 parts. Tier 1 capital has 2 components, which is common equity tier 1 capital and additional tier 1 capital. So it has 2 parts. तो जब हम common equity tier 1 capital की बात करते हैं, it is the amount contributed by the owner. जो owner खुद से contribute करता है when he started that particular bank. So it is the amount which is contributed by him, common equity tier 1. And when we talk about the additional tier 1 capital, it is the amount borrowed from the outside on the perpetual basis. जब बैंक पैसा मार्केट से उठाता है, पब्लिक से उठाता है,
that is called the additional tier 1 capital. So ये core capital होती है, tier 1 capital is the core capital of the bank. So in addition to it, bank also have to maintain a capital conservation buffer and counter cycle buffer, which is to be maintained at 2.5%. जब हम capital conservation buffer की बात करते हैं, capital conservation buffer of 2.5% has to be maintained. जब हम capital conservation buffer की बात करते हैं, तो it is maintained in terms of stress. So इकोनॉमिक शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पर तो कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस capital conservation buffer has to be maintained at the 2.5%. When we talk about the counter capital buffer, it is to be maintained at 0 to 2.5%. So counter cyclical buffer is to be maintained in case of high credit growth. जब बहुत ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ होती है तो काउंटर साइकिल बफर इज आल्सो टू बी मेंटेन्ड एट 0 to 2.5%. When we talk about the leverage rate has to be at least 3%, and the leverage rate is the ratio of the bank's tier 1 capital to the average total consolidated assets. The tier 1 capital is the bank's core capital, which is the paid up capital of the bank, and according to it, the total consolidated loans has to be maintained. Funding and liquidity. When we talk about the funding and liquidity, Basel III created two liquidity ratios, which is the LCR and the NSFR. LCR is the liquidity coverage ratio and NSFR is the net stable fund rate. So now it's also very important, the liquidity ratios. जब हम बात करते हैं liquidity ratios की तो अब like for example जब हम SLR maintain करते हैं, we maintain SLR in the form of cash, gold, and the bank have to keep SLR in the form of gold, cash, and the government securities. So likewise, these are the high quality liquid assets which has to be maintained. तो short term अगर कोई stress period आ जाए उसको maintain करने के लिए liquidity ratios को maintain करना. First is the LCR. When we talk about the LCR will require banks to hold a buffer of high quality liquid assets sufficient to deal with the cash outflow encountered in the acute short term stress scenario as specified by the supervisors. तो जब बैंक लोन दे रहा होता है, कैश आउटफ्लो हो रहा होता है बैंक की साइड से, तब उसको उस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं. So this is to prevent the situations like bank run. This goal is to ensure that banks have enough liquidity for a 30-day stress scenario if it were to happen. तो 30-day stress scenario को maintain करने के लिए, banking operations maintain होते रहे, उनको maintain करने के लिए, this is required. This LCR is required. When we talk about the net stable funding rate require bank to maintain a stable funding profile in relation to their off-balance sheet assets and activities. NSFR requires bank to fund their activities with stable sources of finance reliable over the 1-year horizon. तो जब हम 1-year horizon की बात करते हैं, we talk about the NSFR, net stable funds rate, and we talk about the short-term 30-day stress scenario. We talk about the liquidity coverage ratio. Fine. Here. तो बैंक जितने भी लोन देता है उसके अगेंस्ट में लिक्विड एसेट्स बैंक को मेंटेन करना है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स. सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक ICICI, HDFC and SBI. सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट we will talk about the regulatory capital as a percentage to RWAs. जो मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो की बात करें, दैट इज 5.5. कैपिटल कंजर्वेशन बफर इज 2.5. जब हम टियर 1 कॉमन इक्विटी की बात करें, दैट इज 5.5. कैपिटल कंजर्वेशन बफर इज 2.5. मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर इज 8%, while additional tier 1 capital is 1.5. Minimum tier 1 is 7%. Tier 2 is 2%. Minimum total capital ratio becomes 9%, and the minimum total capital ratio plus the capital conservation buffer becomes 11.5%. So here, the tier 1 capital is also called as the going capital, and where tier 2 capital is also called as the gone concern capital. So capital adequacy ratio formula is here, where capital adequacy ratio formula, it
equals to the tier 1 capital plus tier 2 capital divided by the risk weighted assets. The different assets have different risk weighted attached to it. CRAR, capital to risk weight assets ratio. So this capital adequacy ratio is also called as capital to risk weighted assets ratio. So CRAR and CAR is same. So I'll be discussing some of the important MCQs. First is the Basel Committee on Banking Supervisory Authorities was established by, I hope you know the answer as I've already discussed about it. The correct answer is A, the central bank governors of the group of 10 countries. Next question, which among the following risks are covered under the Basel II norms? Market risk, credit risk, wait, I think it's not good. Operational risk, and all of the above. So the correct answer is D, all of the above. It includes, Basel II includes market risk, credit risk, and operational risk. When we talk about the Basel I, it only includes the credit risk. The minimum total capital ratio under Basel III is, so it's 9%. The correct answer is C. When we talk about the tier 1, it's 7%. Total capital is 9%. Tier 1 capital is 7%. Capital conservation buffer which banks are required to maintain is, the correct answer is B, 2.5%. The third pillar of Basel II Accord is known as, third pillar is the market discipline. The correct answer is A. Which aspect of the financial system do the Basel norms focus? The correct answer is banking. So the Basel norms focus on the banking regulation. Thank you so much for watching the session. So to know more detail about these Basel norms, you have to join our course. Thank you so much.